A very good evening and warm welcome, everyone. I, Dr. Ritika, on behalf of Voice of Healthcare, welcomes all the speakers and the viewers who have joined in for today's discussion on protecting the vulnerable, importance of vaccine for comorbid and immunocompromised individuals. Voice of Healthcare, along with our supporting partners, Pfizer, UN Global Compact Network India, and our hospital partner, Apollo Hospitals, has taken an initiative to bring together the experts and speakers to recognize World Immunization Week. Today, we will be discussing the importance of adult immunization in comorbid and immunocompromised individuals. India's routine immunization program is strong in both reach and adherence, although restricted to pediatric currently. Its resilient nature was demonstrated during COVID for adult vaccination. Many risk groups like comorbid and high risk like sickle cell and HIV may need vaccines beyond the pediatric age as well. We will explore the challenges of vaccinating comorbid and immunocompromised individuals and the strategies to improve vaccination rates in these vulnerable populations. So, without further ado, let's get started with the introduction of our esteemed panelist. I welcome Mr. Gautam Dongre, Member Secretary of the National Sickle Cell, NASCO. Welcome, Mr. Gautam. Thank you so much, Ritika. Thank you. Dr. Sachin D, Consultant Interventional Pulmonology, Critical Care and Sleep Medicine, Fortis, Cunningham Road, Bangalore. Welcome, Dr. Sachin. Thank you, Dr. Ritika. Yes. Dr. Gajendra Singh, Health Officer, UNICEF. Welcome, Dr. Gajendra. Are you there, sir? Hello, am I audible? Yes, sir. You are audible now. Okay, sorry. So something issue because as I told you that I'm in tribal area as of now. So I'm Dr. Gajendra working with UNICEF Raipur office, and as of now I'm in an interior area, tribal area. So excuse me for the network and obviously the video. Thank you. Thank you so much, Dr. Gajendra. Dr. Neha Mishra, Consultant Infectious Diseases, Manipal Hospital, Old Airport Road. Welcome, Dr. Neha. Thank you. Thank you so much. On behalf of Miss Daksha Patel, we have Miss Sudha Rathore. She is a senior officer with NCPI Plus. Hello. Hello, Miss Sudha. Yes. So, good afternoon, everyone. I'm working with NCPI Plus and looking after one of the projects. So, that says suddenly she has to go somewhere. There was an emergency. So, I'll be there on behalf of her. Thank you so much, ma'am. Your voice is little low on a lower side. So, Okay. So, actually, I'm traveling. Yeah. Is it okay now? yes, it is Am I audible. audible? Yes, you are audible now. So, starting with the discussion, I would like to ask Dr. Neha, ma'am, why are vaccines important for immunocompromised and comorbid individuals? See, as the name itself states, that comorbid individuals do not have a normal immune system, and there may be some weakness of their immune system, due to which they will be not able to fight the diseases as well as an immune competent individual will do. Hence, probably they need more protection, more protection from these vulnerable infectious diseases, which are very much preventable by a simple step, that is vaccination and immunization. So, since my point is that people who have comorbid condition, who are immunocompromised status, or who have immune system which is not working as well due to any reason, they will require more vaccination, more robust vaccination program rather, because they will need more protection from all the vaccine preventable diseases, due to the simple reason that they will not be able to fight these diseases as good as any other individual. The underlying diseases the immune system competence may vary from different disease per se. So each comorbidity will not make them as vulnerable as
the other one. So somebody with CKD probably will have a better immunity when compared to somebody who has a B cell deficit. But in all said and done, they will still need protection from the vaccination, which can be easily offered, which can be easily given to them as they need it, probably more than any immunocompetent individual. And we know that in Indian health system, the pediatric population has very good immunization programs, and it has been there, and it's age old. But as it comes to the adolescent, and even for that matter, immunization for compromised patient, the program is not well established, and there is somewhere fear among these patients to take these vaccinations. To come to terms with these vaccinations, we have seen the hesitancy that came in or creeped in with the COVID vaccination. So I think awareness is required so that we can run this program better and well. Thank you so much, Dr. Neha. You have rightly mentioned that due to the comorbidities, their immune system is compromised. So that is more of a reason to take the vaccinations for the immunocompromised and comorbid individuals. So we are talking about the comorbidities. So, Mr. Gautam, sir, what are some of the unique challenges that are faced by sickle cell patients when it comes to vaccination, and how can the physicians address these challenges? Yeah, thank you, Ritika ji. This is a very important question because as per sickle cell disease patient, mostly you know that they lives in a rural area, remote area. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक्सेस जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक तो जैसे कि मैडम ने कहा है कि अवेयरनेस की कमी, तो अवेयरनेस की कमी दोनों ही जगह पे है, प्रोफेशनल भी है। मैं ऐसा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में हमने देखे हैं जब हम पेशेंट से बात करते हैं, और जनरल कम्युनिटी में तो अवेयरनेस है ही है कि उन्हें पता नहीं है कि सिकल सेल डिसीज में कुछ वैक्सीनेशन ऐसी है जो अगर छोटे इसमें बचपन में उनकी छूट गई है तो उनको बड़े होने के बाद भी लेना है। जनरली यही मान्यता है लोगों में कि जो उनके पास कार्ड में 5 साल के अंदर होता है लिखा, उतना ही लेना होता है, उसके बाद वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिकल सेल पेशेंट जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसके साथ में उसके अनेक ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं थ्रू द लाइफ टाइम, तो उसको जिंदा रहने के लिए सबसे पहले तो बचपन में अगर वो डायग्नोस हो जाता है तो वैक्सीनेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है उसे पूरी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए। अगर बचपन में उसके वैक्सीनेशन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, बाद में उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से चलता है, तो हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स काफ़ी सर्वाइव करते हैं मोर देन 40, 50, 60। लेकिन जहाँ वैक्सीनेशन शुरू में नहीं मिला हो, अवेयरनेस की कमी की वजह से उसे डोजेस नहीं मिले हो, या फिर और किसी वजह से उसके नहीं मिले, और एडल्ट होने के बाद में जब वो निमोनिया जैसे प्रॉब्लम को फेस करता है और उसका निमोकोकल वैक्सीन बचपन में नहीं हुआ होता है और एडल्ट में कोई डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब नहीं किया होता है, तो उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी डेंजर में जाती है। हमने ऐसा भी अनुभव किया है कि काफ़ी सारी डेथ्स जो है वो यंग एज में निमोनिया की वजह से हो जाती है। और सिकल सेल डिसीज में निमोकोकल वैक्सीन अगर उन्हें बचपन में मिल जाए, और अगर उन्हें नहीं मिला तो एडल्ट में मिलना चाहिए, ऐसे बताने वालों की भी थोड़ी कमी है। अगर इस एरिया में थोड़ा काम हो जाए कि निमोकोकल एडल्ट में भी दिया जाता है तो हम हमारे सिकल सेल पेशेंट को ज़रूर बचा पाएंगे। साथ ही काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं, डॉक्टर्स हमारे बताएंगे ही कि जो सिकल सेल पेशेंट्स का स्प्लीन नहीं होता है, निकाल दिया जाता है, स्प्लेनेक्टॉमी हो जाता है, तो उनको भी हाई रिस्क में देखा जाता है और उन्हें एडल्ट एज में निमोकोकल वैक्सीन कंपलसरी होती है। तो इसके बारे में भी जानकारी बहुत कम लोगों में है, तो मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूँगा स्टेक होल्डर्स तक, पॉलिसी मेकर्स तक, कि इसका अवेयरनेस दोनों ही लेवल पर हो,
प्रोफेशनल लेवल पर भी चाहिए, क्योंकि हमारे पेशेंट जो रिमोट एरिया में रहते हैं वो जनरली ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में। ऐसी जगह पर नॉर्मल वैक्सीनेशन जो हमारी सरकार चलाती है उसके बारे में तो पूरी जानकारी है, वो बहुत अच्छे से रन करते हैं। लेकिन जो इस तरह की चीजें मेनिंगोकोकल हो, निमोकोकल हो, इनकी जरूरत इन पेशेंट्स को जो सिकल सेल जैसे डिसीज में है कितनी जरूरत है, इस बारे में जो जानकारी है वो प्रोफेशनल भी होनी चाहिए। साथ ही जिस तरह से हम अदर वैक्सीनेशन का कैंपेन बचपन से ही जो लगाते हैं उसका करते हैं, वैसे ही इन वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी बता पाए, अगर डॉक्टर मिस कर गया तो वो भी बता पाए कि हमारा ये नहीं हुआ है तो ये हमें मिल जाए। और अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी जब अवेयरनेस होगा तो नेचुरली अवेलेबिलिटी आ ही जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर गौतम, आपने बहुत ही सही पॉइंट उठाया कि आई थिंक पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन के बारे में तो अवेयरनेस है लोगों में, बट एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं एंड इस वजह से अवेयरनेस है, क्योंकि आपने एक बहुत सही बात बोली है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोग ज्यादा जाते हैं एंड वहीं से उन्हें अवेयरनेस मिलता है। सो आई थिंक हमें खुद भी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है रिगार्डिंग द एडल्ट इम्यूनाइजेशन in not only for sickle cell patients but for patients like for TB, HIV, hepatitis and the patients who have other comorbidities as well. So moving on this part as well, Dr. Sachin, I would like to ask you that what are the common vaccines that are recommended for immunocompromised and comorbid individual, and are there any vaccines that are particularly important for these high risk groups? I think this is the most valid question, Dr. Ritika, which has been fired to me. All right. So basically, जो recommendation की बात आती है कि adult vaccination का कहाँ पे क्या दिया जाए, तो it is not like the universal immunization program जैसे बच्चों में होता है. So in kids we have this well-formed schedule जो हम Indian Academy of Pediatrics and WHO has formulated proper guidelines that these are the bare necessity and basic immunizations which every kid should receive. But this is not the same for adult vaccination. So adult immunization का जो recommendations हैं, schedules हैं और indications हैं, it differs from region to region. एक region में अलग होता है और दूसरे region में अलग होता है. But still, when it comes to a uniformed protocols, we have 2-3 important guidelines which are available across the globe. One of that is the WHO in association with the IDSA, Infectious Disease Society of America. They have formulated some recommendations कि इतना basic immunizations adults को भी देना चाहिए ताकि उनको हम mortality से बचा सकें. जैसे गौतम जी ने कहा कि काफी सारे हमारे adult patients की immunity कम होती है, सिकल सेल पेशेंट्स होते हैं, और जैसे डॉक्टर नेहा ने कहा इनकी इम्यूनिटी जो है 1 to 10 स्केल में किसी का 1 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है. तो इट इज अ स्केल, इट इज नॉट जस्ट अ यूनिफॉर्म थिंग. सो हर एक को हमें नजर में रखते हुए एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया गया है. सो आईडीएसए क्या रिकमेंड करता है कि there are some common preventable diseases in adults as well which can be protected efficiently by vaccination. So which are these vaccinations for diseases? जब इसकी बात आएगी तो मोस्ट कॉमनली एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हम जो करते हैं, जैसे गौतम जी ने भी कहा कि काफी सारे लोग निमोनिया के साथ मर जाते हैं. सो निमोनिया वायरस के भी कारण आती है, जैसे कोविड में भी हमने देखा काफी सारा मोर्टालिटी हुआ. इन्फ्लुएंजा एक अलग पैंडेमिक है जो अभी हम रिसेंटली फेस कर रहे हैं, H3N2 का अभी रिसेंटली बात हो रही है. सो जब इन्फ्लुएंजा वायरस इतना सब मोर्टालिटी क्रिएट कर रहा है तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन को हमें रेकमेंड किया जाता है सारे एडल्ट्स में. तो सेकंड है कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन जिसकी बात हुई थी, जैसे सिकल सेल पेशेंट्स होंगे या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो इनमें न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, जो कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया होती है एडल्ट्स में, तो इससे प्रोटेक्शन देने में काफी हद तक मदद करता है. तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन सेकंड वैक्सीन है.
तीसरा जब बात आएगी तो अभी रिसेंटली हम काफी बार बात कर रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में, वुमेन विद सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर जब लेडीज में देखा जाए तो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड डेथ्स हो रहे हैं। तो इट इज वेरी इजीली प्रिवेंटेबल बाय अ वैक्सीन कॉल्ड HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो अवेलेबल है। तो दिस इज रेकमेंड इन एडोलेसेंट एज ग्रुप में हमें रेकमेंड किया जाता है। बाकी बात किया जाए तो हेपेटाइटिस की बात हो रही थी, तो हेपेटाइटिस A एंड B का भी कॉमनली रेकमेंड किया जाता है इन सर्टेन स्पेसिफिक इंडिकेशंस। बाकी टेटनस होगा या डिप्थीरिया होगा, पर्टुसिस होगा, जो हम चाइल्डहुड में यूजुअली UIP में हम रेकमेंड करते हैं, वो एडल्ट्स में भी हर 10 साल में हम रेकमेंडेशन दिया जाता है। अदर देन दिस मेनिंगोकॉकल निमोनिया, मेनिंगोकॉकस का जो CNS इन्फेक्शन मतलब ब्रेन के इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसकी वैक्सीनेशन है। अदर देन दैट अभी रिसेंटली वैरिसेला और जोस्टर वैक्सीन भी रिकमेंडेड हुए हैं। हर्पीज जोस्टर वैक्सीन जो नया वाला रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल किया गया है शिंग्रिक्स नाम का, तो दिस वैक्सीन आल्सो इज गेटिंग रिकमेंडेड फ्रॉम IDSA सो दैट अडल्ट पॉपुलेशंस को हर्पीज ना हो और हर्पीज के कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो एक एक करके मैं एक एक छोटा सा ब्रीफ में बताया जाऊं एक एक वैक्सीन के बारे में, क्योंकि आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को और डॉक्टर्स को भी समझ में आए कि ये वैक्सीन किस में देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो काफी, एज गौतम जी ने कहा, ये बस पेशेंट्स के लिए बात नहीं है, डॉक्टर्स को भी काफी हद तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन इतना सॉलिड नहीं है, तो वो रेकमेंडेशन कैसे करेंगे पेशेंट्स को कि वैक्सीनेशन कराओ। तो ब्रीफली बताया जाए तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम बोलते हैं, वो वायरस जो इन्फ्लुएंजा आती है उसके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए होती है। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो अवेलेबल है मार्केट में, वो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन बोलते हैं हम, मतलब 4 वायरल स्ट्रेन्स को कवर करता है। 2 इन्फ्लुएंजा A स्ट्रेन्स को और 2 इन्फ्लुएंजा B स्ट्रेन्स को कवर करता है। लेकिन हमें पता है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस काफी म्यूटेट करता जाता है, चेंज होता रहता है अपने आप में। तो हर साल इसका अलग अलग वैक्सीन आते रहते हैं, तो हर साल इसको वैक्सीन लगवाना जरूरी होती है। यूजुअली हम अक्टूबर टू नवंबर इस सीजन में लगाते हैं जब इन्फ्लुएंजा का सीजन होता है। तो इस अक्टूबर टू नवंबर सीजन में हर साल एक इंजेक्शन टीका हम इन्फ्लुएंजा का देते हैं। तो किसको देना चाहिए, सबको देना चाहिए या फिर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को ही देना चाहिए, जब इसकी बात आएगी तो यूजुअली हम एक्सट्रीमिटीज ऑफ एज ग्रुप में रेकमेंड करते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। यंगर एज ग्रुप अप टू 5 इयर्स एंड अबव 65 इयर्स, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, डेवलपिंग स्टेज में होती है। जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट और लंग्स की बीमारी है, डायबिटीज है, किडनी डिसीज है, लिवर डिसीज है, या सिकल सेल जैसे बात हो रही थी, हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रेगनेंसी है, या हेल्थ केयर वर्कर जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लेते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन काफी हद तक अराउंड 90% एफिकेसी भी दिखाया गया है। दूसरी बात आएगी तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन की। तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन इज वाइडली अवेलेबल, निमोनिया से प्रिवेंट करता है। तो हम यूजुअली इसमें 2 वैक्सीन देते हैं, एक प्रिवेनार करके PCV13 पहले देते हैं ताकि लंग्स की और म्यूकोसल इम्यूनिटी बढ़ जाए, और 2 महीने बाद एक न्यूमोवैक्स करके एक पॉलीसैकेराइड वैक्सीन देते हैं ताकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो ये वैक्सीन किस में रेकमेंड करते हैं, न्यूमोकॉकल इवन हेल्दी पीपल में भी देते हैं हम। अगर प्रेवेनार दे रहे हैं तो 50 ईयर के ऊपर, और न्यूमोवैक्स दे रहे हैं तो 65 के ऊपर हम दे सकते हैं हेल्दी लोगों में। और जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, सारे एडल्ट्स में हम ये दे सकते हैं जिनको हार्ट और लंग्स की बीमारी है, किडनी लिवर की बीमारी है, शुगर है, सिकल सेल है, जिनका स्प्लीन नहीं है, स्प्लीन निकाला गया है, जैसे सिकल सेल डिसीज की बात हो रही थी, जिनको ल्यूपस है, SLE है, ऑटो इम्यून डिसीज है, इन सब में हम ये न्यूमोकॉकल वैक्सीन रेकमेंड करते हैं। उसके बाद जब डिप्थीरिया और टेटनस की बात आएगी तो सबको तो पता ही है, ये बचपन में हम सबको DPT इंजेक्शन टीका लगा हुआ होता है। सो अडल्ट्स में कब देना चाहिए करके बात आएगी तो एक TD करके एक वैक्सीन आती है जिसमें डिप्थीरिया और टेटानस को कवर किया जाता है, जो हर 10 साल में लेना जरूरी होती है बिटवीन 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, स्पेशली हेल्थ केयर पर्सनल को। और प्रेगनेंसी में तो टीका तो टेटानस का लग ही जाता है। उसके अलावा आपको पता होगा जब भी चोट लगती है किसी को, जैसे माइनर ट्रॉमा लगा, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर टीका 10 साल से ज्यादा हो गया है तो एक और TD इंजेक्शन लगवा लो। और अगर कोई मेजर ट्रॉमा हो गया और 10 साल से ऊपर हो गया है तो उसके साथ TT के साथ हम TIG भी देते हैं, कि इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी देते हैं ताकि वो इम्यूनिटी थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाए। उसके अलावा हर्पीज जोस्टर की जो शिंग्रिक्स वैक्सीन अभी आई है,
काफी हद तक प्रोटेक्शन है उसका, 90% से ऊपर प्रोटेक्शन दे रहा है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्पीज और पोस्ट हर्पिटिक जो कॉम्प्लिकेशंस न्यूरोलजिया आती है। तो यूजुअली 2 डोज देते हैं 2 महीने के अंतर में, और यूजुअली इट इज रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी अबव 50 ईयर्स। जो भी हेल्दी है उनको भी दिया जाता है, जिनको ऑलरेडी हर्पीज हुआ था उनको भी दे सकते हैं। एंड इन बिटवीन 19 to 50 ईयर्स जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, इनको भी हर्पिक्स वैक्सीन हम दे सकते हैं। बाकी जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो HPV वैक्सीन मैंने कहा, ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है जो 0, 2 एंड 6 मंथ्स 3 डोज में दिया जाता है। यूजुअली एडोलेसेंट लड़कियों में देते हैं हम, जब 11 ईयर्स या 12 ईयर्स लड़कियां हो जाते हैं तब ये वैक्सीन को हम रेकमेंड करते हैं, बिफोर दे इवन एनकाउंटर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो बिफोर द एक्सपोजर ऑफ द वायरस ये हम वैक्सीनेट किया जाता है ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम हो जाए। बाकी बात आएगी तो हेपेटाइटिस, आपको तो पता ही है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है जो हम काफी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में, लिवर डिसीज लोगों में, लिवर ट्रांसप्लांट वाले लोगों में, आईवी ड्रग यूजर्स में, और होमोसेक्सुअल्स हैं या फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको मिल रहा है, और फूड हैंडलर्स हैं, उन सब में हम 0 एंड 6 मंथ शेड्यूल में हम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, ऑब्वियसली सबको पता है, ये हाई रिस्क जिनको ब्लड का कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, ब्लड बैंक में काम करते हो, या जो होमोसेक्सुअल्स हो, या जिनका हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर हो, या जिनके घर में हेपेटाइटिस बी का एक मरीज हो जिनका वो ख्याल रख रहे हैं, इन सबको, स्पेशली HIV पेशेंट्स को, किडनी और लिवर डिसीज पेशेंट्स को ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना बहुत ही जरूरी होती है। और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को हम हेपेटाइटिस बी का टाइटर भी चेक करवाते हैं, अगर वो 10 से नीचे है तो अगेन उनको एक बूस्टर शॉट भी दिला जाता है, और 65 के ऊपर भी एक हेपेटाइटिस बी बूस्टर हम देते हैं। बाद में फाइनली मेनिंगोकोकल का एक वैक्सीन है जो हम यूजुअली मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट करके आता है, जो ये पैंडेमिक्स हैं, आउटब्रेक्स हो रहे हैं तो हेल्थ केयर वर्कर्स को सब दिया जाता है। उसके अलावा जिनका स्प्लीन निकाला गया है या लूपस है, इन सबको भी दिया जाता है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। एंड स्पेसिफिकली मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये जो ट्रैवलर्स हैं, हम सऊदी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, हज ट्रैवलर्स एंड ऑल, वो सब हमारे पास आते हैं बिफोर गेटिंग रिकमेंडेशन, तो वी ऑल वैक्सीनेट देम फॉर दिस वैक्सीन मेनिंगोकोकल। एंड टाइफॉइड का वैक्सीन तो ओनली ड्यूरिंग आउटब्रेक्स रिकमेंडेड होता है, स्पेशली इन अ कम्युनिटी हु इज एट रिस्क फॉर इट। तो इसका एक इंजेक्टेबल वैक्सीन आती है जो हर 3 साल में दिया जाता है हाई रिस्क पॉपुलेशन में, या अभी ओरल कैप्सूल्स आ रहे हैं तो 3 डोजेस दिया जाता है अल्टरनेट डे में, बहुत ही सिंपल सी शेड्यूल होती है। तो these are basically the vaccines which are recommended for all the adult patients to summarize. उसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको रूटीनली हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, MMR, वैरिसेला और टीडैप ये वैक्सीन रेकमेंडेड है। और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही होगा, टेटनस और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी रेकमेंडेड है, यूजुअली ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। So to summarize, these are all the vaccines and how to give the vaccines in what age groups and recommendations are there from IDSA society. Thank you so much, Dr. Sachin. You have very finely elaborated such an informative topic about the vaccination. We were all talking about adult immunization, but you have very elaborately defined each and every vaccination. So it is an interesting awareness session for us as well. I hope our viewers are listening to these kind of specifications that you have just told. So thank you so much for this informative and elaborated version of what protocols are there for be it immunocompromised, comorbid, or a normal adult person. So thank you so much, Dr. Sachin. Moving on to Miss Sudha, ma'am. Are you there? Oh, Yes, yes, ma'am. yes, Dr. Ritika. Yeah, I'm here. Yes, ma'am. So what are some of the barriers that individuals with HIV, TB, or hepatitis may face when it comes to accessing these necessary vaccinations, and how can these barriers be addressed? Okay, first of all, I'll thank to all the family members because it was such an informative session. And what I wanted to say, like this type of knowledge is very important
Vaccines are critical components for protecting, especially the PL-HIV, people living with HIV from preventable diseases. However, there are some barriers. First of all, like I mentioned, and even the doctor previously was mentioning, the most important thing is lack of knowledge. I am in the HIV field, but still I am not aware of all the knowledge that has been disseminated now for us. So even to the top level, to NACO level, to SAS level, everyone has to know about what kind of vaccines are important for especially the immunocompromised and for PLHIV clients or people. We don't say patients, but yes, people living with HIV and AIDS. And India is having 2.3 million of people living with HIV, and that is the third largest number of people living with HIV in the entire world. And now, as the data says that the new infections has been decreasing, but a vast number of very high number of people who are on the medicine, but they might be and then they have been facing this phase of morbidity and immunocompromised situation. So in that case, first of all, knowledge is very important from top level to the community level, uh, to all the primary health center, to all the level. It is very important, like why it is, what is the need and where to access. Also, where to access. I have not seen such kind of any charts for this kind of vaccinations in most of the health sector. So this is also the media is also they can also play a very vast role, not only in the print media in the hospitals and other public places and the other settings, but also to in television and through folk media and other media, because this is awareness we don't know. We are aware like how HIV is spread, what are the how it is prevented, and where to take the medication, because in India. Uh, all the medication is free for this ART medication is free. But about this very important thing where a large number of people are going to face the same stage, what is the discussion for of today's discussion. So this is very important that knowledge dissemination is very important. Another thing is the barriers may be like uh, due to the concern regarding the safety and efficacy of vaccines. So people are not aware of that. So this kind of information is also it should be provided. I don't know about the vaccine guidelines. Might be they might be changing. So this is also it should also be updated uh, to the provider, service provider. And also the timings of the vaccination among HIV adults and even children, but especially for the adults. Uh, in HIV case, there are various stages of HIV. People are having various line of drugs. So, what in that line of drug, what kind of this vaccination will be effective? Whether it will affect, whether it will have some adverse effect while taking to active drugs, whether it will be suitable or not. So, this kind of issues are also we have to keep in mind. Mm, There are other things also if we go to the community level, like if we uh, talk about the vaccines. So sometimes in the community, or you can say at the personal level, people are so because people are having this cases of they are having this HIV virus, and sometimes they are so fed up of their life, they might be thinking that अभी तो चलो इसका तो ड्रग खा रहे वैक्सीन से क्या करना मरना कोई नहीं. So this kind of माइंड सेटिंग भी होती है हम लोगों के यहाँ, अगर HIV की फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी की अगर बात करें तो फैमिली में भी ऐसे होता है कि बहुत बार स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन होता है. अभी क्या ART ड्रग भी कई बार वो लोग सब करके लेते हैं, बिकॉज इफ यू गो टू द फील्ड देयर आर people who are telling that we are not going to take the medication for the nearest ART center जहाँ से एंटीरिट्रोवायरल ट्रीटमेंट का जो गवर्नमेंट का सेंटर होता है, तो दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फार अवे. वो लोग 30 40 50 किलोमीटर दूर जाते हैं. उन्हें ये लगता है कि अगर मैं यहाँ से ART ड्रग लूंगा
तो मुझे यहाँ पे लोग पहचान जाएंगे, बिकॉज अभी जहाँ से लूंगा वहाँ पर जानने वाले होंगे। तो इन दैट केस अगर हम इस सिचुएशन में बात करें कि अभी वैक्सीन की बात करें, तो उन्हें ये लगेगा कि अभी तो हमारा एआरटी वाला जो पहले से जाता है वो तो छिपा हुआ है, वी आर हाइडिंग, अभी मैं वैक्सीन लूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा डॉक्टर को। तो दिस इज काइंड ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज आल्सो एसोसिएटेड विद, that is also playing a very big hurdle, because this stigma itself kills. HIV से तो नहीं मरेगा आगे, बट इस स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन से मिल हो सकता है। तो दिस इज काइंड ऑफ आल्सो हर्डल होता है। तो यू सी फ्रॉम पर्सनल लेवल टू ना इंडिविजुअल लेवल टू फैमिली कम्युनिटी लेवल एंड टू द एंटायर सिस्टम लेवल, there are many hurdles. This is just a practical experience what I am explaining, because I have been watching the HIV since the last few years. So this is all about all from my side. But I would really suggest you to put forward these kind of list of vaccines, especially for HIV and of course TB and other patients also, to the policy level, to the especially if you talk about in HIV sector, it is the NACO level. So that in state and other levels also, this kind of availability, knowledge, everything will be available. Thank you so much. Yes, thank you so much, ma'am, for elaborating that for us. That one is that lack of knowledge on each and every level of the community that they are present in. Second is the psychology of the patient that you were talking about, that they are fed up with the disease itself, that they don't even think about taking the vaccination. And third thing that you mentioned is the stigma of the disease, that what people will think if I say that I have HIV, or I have hepatitis or some other disease. So I think the stigma that is related to HIV is the major concern right now, which is a major barrier for them to take vaccination. So talking about that stigma, I would like to ask Dr. Gajendra, sir, how can we address vaccine hesitancy among these immunocompromised and comorbid individuals and ensure that they receive the necessary vaccine to protect them from the infectious diseases? Okay. Thank you. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So before moving forward, I would like to put forward two important points. That first thing is that vaccine hesitancy word is normally used in the for the public health programs in the context of normally the immunization which is given for mother and children, pregnant women and children. So in that case, the vaccine hesitancy actually word literally means that as a system, as a supply side, we are doing everything, but the demand side it is not accepted, right? So vaccine hesitancy in the sense hesitancy at the receiver end. But in adult immunization, this is not the case fully, because Right. here the first thing which is very important to understand is that awareness part, that how much people are aware about it. Then comes the availability, then comes the affordability, and then comes to the accessibility, and finally it comes to the hesitancy. So hesitancy itself is actually an incomplete notion here in terms of adult immunization. The second part here is that in child in child immunization, more or less your cohort the cohort of your target population, whether it is pregnant woman or child, they are more or less known, and it is in your reach because of the systems, because of the public health system. So you know the people that whom to immunize. In adult immunization, the cohort is too big. It is actually too big. And if you specifically ask about the immunocompromised people or maybe the comorbid, frankly speaking, for that we are fully dependent on the active surveillance, which is basically that we are getting. How do we know that who are comorbid and immunocompromised? Because that is we are getting the data or the numbers from the hospital data. So these are the known people which are coming to your institutions, whether public or private, and you know that these are comorbid and immunocompromised. In these population itself, we are not able to cover fully. So just forget about those who are never screened.
and those who are never reached, that population is too what you can say, beyond your imagination. And this one thing was observed during the COVID time. At that COVID time, when you initially look at the symptoms and everything, then you started that the governments, the state governments, and even the central government has advised to the SARI surveillance, SARI, this severe acute respiratory illness surveys in the general community. And that was such a humongous task, because you have to cover your whole population. It's just like doing census, and that only one just you are doing survey for one only that one condition. And governments realize that it is such a difficult task in a public domain. So this particular thing, that comorbid and immunocompromised individual, that is a very what you can say, focused domain in that whole adult immunization. So that itself is a very much compromise. Now let's come to the vaccine hesitancy part. So it is a complex issue, and addressing it among these people requires a tailored approach. There are so many things, and the principles are same whether it is adult or what you can say, the other non-adult, or you can say the focused group like the pregnant woman and child. But the key strategies are same. So first thing is that what are the concerns? What are the concern of this population? So addressing the concern of vaccine hesitant individual is very crucial, and these concerns may include fear of side effects, perceived lack of effectiveness, and mistrust of pharmaceutical companies. It can be anything. Healthcare providers should also listen to these concerns and address them in a respectful and empathetic manner. So I am talking from the public health perspective, because I have been talking to the communities as well as the government side, and this is what we have observed while interacting to the communities. So this I'm talking on the basis of that experience. Second part is the awareness, which everybody had talked about, the educate. So basically providing accurate and clear information about vaccine is essential to help individuals making informed decisions. And this education be delivered through various channels. I would say healthcare providers, community leaders, social media, public health campaigns. It can be anything. And this education should also involve the benefit, risk, and the science behind the vaccine. Most of the time, as a supply side, we focus on the benefit part. कि आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा है, बहुत फायदा है. And people keep stressing on that part, फायदा. And like any pharmaceutical product, vaccines also have some side effects or some risks associated with this. The 100% effectiveness or efficacy is not there always. That is but as a public health policy maker or public health person, or as a policy maker, people sometimes get into that flow and they just insist on benefit part कि हमारा जो IC होना चाहिए या हमारा जो communication to the community होना चाहिए, that should be more focusing on benefit part, which is good, but you should also tell about risk, because if nobody is going to tell the risk and something happens, that's how the mistrust happened with the system as well as the pharmaceutical provider. And that was the case with the COVID vaccine initially. Although the COVID vaccine is not the standard case for that, because that is a pandemic and that the scenario was happening everywhere, so you cannot generalize in a public particular population. But that was the case also seen there, that people, although it was good for them, but people were not believing. Why? Because they were not having that trust, because everybody was talking about benefit. It is required, it is required. And when people started asking the questions that how it is required, what will happen, and are you sure that then when the government or when the technical bodies start answering the question, then people started questioning those. So why not from the start? Because adult immunization, frankly speaking, is a newer thing in our population. It is slowly getting the pickup. But I am talking from the public health perspective, where your major population is coming to the public health institutions. And if you talk about those populations, so if government really is very sincere about that, the government should think from these perspective, from a larger community perspective also. The third part can be the involve the trusted individuals. So if you see that in public health domain, for the pediatric immunization and the pregnant women, you must have seen Amitabh Bachchan doing the advertisement, or Priyanka Chopra. These are the ambassadors. So these are the trusted individuals, and these are the basically the change makers, right? So these trusted individuals should also be used for adult immunization. I have never seen, at least I have some advertisement I have seen related to the HPV, this cervical cancer vaccine, which is getting the pickup, getting attention slowly. But apart from that, I have never seen anybody advocating for the adult immunization, because whomsoever is the ambassador, they themselves may not be that much what you can say convinced about that. So it is as somebody has said in the beginning, that it is the need for the education is for everyone, including the provider, including the receiver, including the other stakeholders, participant. Everybody should be on the same page first. So involvement of the trusted individuals, and especially those trusted individuals who have availed this vaccination, and who are what you can say, who can be the change maker. It can be family members, friends, community leaders,
the influencers, the religious leaders, social groups, anybody. They can play an important role in encouraging vaccine uptake among comorbid and immunocompromised individuals, and these can help disseminate accurate information. And why I'm saying and stressing on this word, because in the COVID, the another very important thing which we have all fought is the infodemic. More than the information, there was misinformation, and when adult immunization comes into picture, that definitely the same thing will repeat in a some or other way. Now the point part is accessible, that if you are real, if let us say that if you convince the community and community is very sincere about it, then that the vaccination should be accessible to everyone, whether it is private or whether it is public. If you really want to make it a public program, then the availability part and the accessibility part, so it should be accessible. So if you are bringing it to public, then your vaccine availability should be there. And this also we have seen in COVID कि एक मौका ऐसा भी आया था कि when everybody was willing but vaccines नहीं थी, और जब vaccines थी तब लोग नहीं थे. So this cycle we have to somewhere take care of that supply chain also. So that is another thing which we for the addressing the vaccine hesitancy. And community organizations should be taken care in the confidence, because the community believes on the local people, as simple as that. And the communication approach is very important here, because and it should not be replicated like the pediatric immunization or the focus group other focus group. So tailor-made communication to the individual level of health literacy, cultural beliefs, and language preferences, and can also help to improve the vaccine uptake. For example, providing information in multiple languages and using culturally appropriate message may be more effective, right? So overall, addressing vaccine hesitancy among comorbid and immunocompromised requires a multifaceted approach that includes education, addressing concern, involving trusted individuals, providing accessible vaccination, partnering with community organizations, and finally the tailor-made communication. And above all, we should be able to understand first that vaccine hesitancy here is not only on the receiver end. It is the equally applicable term for all of us, including the service side, including the stakeholder, NGO, communication agency, everyone. Because hesitancy, as I said earlier, hesitancy comes into the hesitancy comes into the picture when system is doing all efforts and we are not doing everything here. Thank you. Thank you so much, Dr. Gajendra. You have said so many valuable insights and touched each and every topic that is concerned with the adult and immunocompromised immunization there, and apart from that, we are doing maternal and child immunization program since long, and COVID has taught us that adult immunization is something that we can do. There were some drawbacks to the type of communication that were given, that you said that there was some miscommunication that was there in terms of COVID, but this is something that is doable. And each and every stakeholder, you have rightly mentioned that each and every stakeholder should come together and collaborate on this, and then we can approach it in a better way, as we did for COVID, but in a better and more reachable way. So moving on to this collaboration part of it, I would like to ask the question to Dr. Neha, ma'am. What role does a physician play in making these immunocompromised and comorbid patients understand the potential risks and benefits of vaccination, particularly when it comes to balancing the risk of vaccine preventable diseases with the potential side effects? So, yeah, thank you. With this, I would want to say that I agree with Dr. Gajendra that physician can only play a role in convincing others when once he or she is convinced. So, first of all, I think they should be convinced enough that whatever they are going to do for the patient in this case, that is going to be beneficial for that individual. Um, so I run an adult immunization clinic for quite some time now, and the one thing I have done in my immunization practice, that I give them a just a minute. Yeah. So I give them a full detail about each vaccine. They get a whole sheet with all the risks, all the benefits, well explained, making sure that they understand. I spend at least 5-10 minutes with everybody, making sure that they understand what they are taking and what are the benefits, and as well what are the risks associated. Because if you don't tell them the risk, that's where the disbelief occurs. So in such case, patient can take a informed decision. They can accept
the acceptability will be more. They can, if they are agreeing enough and they are agreeing sufficiently, they can actually influence other people around them and make sure that they have not been forced to do this activity just because somebody else thinks that it's going to be beneficial for them. So I think convincing yourself is very important. Number one. Number two, convincing the patient in the right manner, uh, following proper approaches to explain it to them, so that they don't think that it is being forced on them. Rather, they think that it is probably required for them, and उनको इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है और इसलिए नहीं डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर को देनी है, इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा है डॉक्टर। तो ये अगर उन्हें समझ में आ जाता है कि डॉक्टर हमारे बेनिफिट के लिए कह रहा है और हम अगर ये लेंगे तो हमें फायदा होगा, so I think unka acceptability immediately changes. So that I think is something very important. Apart from that, I think you should see when it comes to convincing, you have to address the fear of risk factor very well. The risk, the adverse reactions that may happen with the vaccination. See, patients, even doctors should know that some live vaccinations are contraindicated in immune compromised individuals. Importance of educating themselves first and then educating the patients in the right manner plays a very, very, very important role, I think, I believe. So, because as I said, I run it for such a long time that I understand that if you don't address them, you'll not get the patient taking it. And and you don't want to force it, right? You don't want them to forcefully take something just because you think that it's going to be beneficial. So it's not it is something that is probably on a community level you want to make a difference, not at the individual level. So once we start thinking about it in that perspective, the whole approach towards it changes, and then it becomes a better deal rather than just a forceful implementation of a policy. So I think that's more important, and just explain them well. That takes care of most of the things, I guess. Yeah. Thank you. Yes, thank you so much, Dr. Neha. You have rightly mentioned that, gaining that trust of the patient by telling them both the risk and benefit of it, so that they don't think that, physicians or doctors are forcing them to take the vaccination. They have to take the informed decision. And Dr. Gajendra also mentioned the same thing that we should know both the risks and benefit. In COVID also it happened that people were saying that it is for the benefit, it is for the benefit, but there was some mistrust that was created, as both the risk and benefits were not told to the population, and there were more of a misconception that were related. So I think you have rightly mentioned that. And moving on to that, I would like to ask Mr. Gautam, sir, how can we ensure that sickle cell patients have access to those necessary vaccine, particularly in the underdeserved communities that you told in the first session of in the start of the session? हाँ जी रितिका जी, ये सबसे अहम सवाल है। चूंकि मैं सिकल सेल कम्युनिटी से आता हूँ, तो मैं सिकल सेल पेशेंट पर्सपेक्टिव के तरफ से ही मैं जो जानकारी है वो आपको यहाँ दे पाऊंगा, जिसमें जैसे आपने बताया है कि ये वैक्सीनेशन हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बात की जानकारी हमें भी कुछ वेबिनार्स से मिलती है, लेकिन अभी तक जो पेशेंट्स, जो कम्युनिटी, जो 14 लाख सिकल सेल पेशेंट्स हमारे सारे ट्राइबल्स और बाकी जोन मिलाकर है, जिसमें मैक्सिमम तो रिमोट एरियाज में रहते हैं, वहां तक इस बात को अभी तक हम पहुंचा नहीं पाए हैं किसी भी तरह से, क्योंकि ये सारी चीजें तो सरकार ही कर पाएगी। तो हम चाहते हैं जिस तरह से एक बच्चे का इम्यूनाइजेशन होता है, तो जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं मदर, तो उनके पास एक चार्ट दे दिया जाता है जिसमें ऑलरेडी सारी चीज मेंशन होती है। तो मेरी भी सोच यही जा रही है कि एडल्ट वैक्सीनेशन अगर अच्छे से ड्राइव करना होगा, तो उसे भी इस तरह के चार्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाए, जैसे निमोकोकल और मेनिंगोकोकल, और उसका ड्यूरेशन, टाइम, या फिर एक टेंटेटिव एज लिख दी जाए। इस तरह से अगर एक पेज अगर एक्स्ट्रा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट हम साइमल्टेनियसली एडल्ट तक पहुंचा पाएंगे।
तो पॉलिसी मेकिंग लेवल पर अगर ये चीज हो जाए कि ये जो जरूरत की चीजें हैं जो लाइफ सेविंग है, ऐसा नहीं कि हम ये सिर्फ वैक्सीनेट करके रख रहे हैं, लेकिन चूंकि सिकल सेल कम्युनिटी से हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से जो डेथ्स है वो यंग एज में हो रही है, और कहीं उनको अगर ये वैक्सीनेशन मिल जाए तो शायद वो इस डेथ से बच जाए और सरवाइव कर जाए। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एज ए पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द इसकी जानकारी एटलीस्ट पेशेंट को और प्रोफेशनल्स को मिल जाए। जानकारी मिल जाएगी तो जैसे कि सर ने ऑलरेडी कहा है कि अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और अवेलेबिलिटी के साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो उनका इकोनॉमिक लेवल मीडियम से नीचे होता है। तो अगर जानकारी हो गई है उस पेशेंट को कि निमोकोकल वैक्सीन लेना है, एडल्ट में मेनिंगोकोकल लेना है, उसको पता चल गया। अब हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसे पता चल गया है उसे लेना है, तो अब उसे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहां उसका कॉस्ट इफेक्ट उसके लिए मायने रखेगा। तो मेरा इंडस्ट्री को ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा कॉस्ट पर भी काम करें, कि उसे कम से कम इतना तो ला ले कि हम परचेस कर पाए। और जब तक गवर्नमेंट से फ्री नहीं होता, कुछ जगह पर तो आ गया है, लेकिन जब तक सारी जगहों तक इसकी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होती, तब तक कम से कम एक सोशल एस्पेक्ट समझ करके एक एक उस लेवल से सोचे कि हम इस चीज को पहुंचा करके लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, तो थोड़ा कॉस्ट पर भी काम करें और उसको मिनिमाइज करें। तब तक हम प्राइवेट से ले लेंगे जब तक ये पूरी तरह से गवर्नमेंट में एक्सेस नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब अवेयरनेस पार्ट है, और भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है और उसमें इस चीज को करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चूंकि आप और हम जान गए हैं कि ये चीज उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ सेविंग है, तो हमने भी थोड़ा उस पर काम करें, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा। और ये सारी चीजें एक चार्ट में आ जाए, इस तरह से ही हम उस चीज को पता समझ पाएंगे और पेशेंट तक पहुंचा पाएंगे, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हम नीचे जो लोग मोबाइल हैंडल नहीं करते, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जो सिर्फ पीएससीज में जाकर के डॉक्टर के भरोसे या फिर जो लाउड स्पीकर के थ्रू जो अवेयरनेस होता है उस पर डिपेंड होते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कम कैसे हम एडल्ट वैक्सीनेशन की जानकारी उन तक पहुंचाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और इस दिशा में अगर हम काम करें तो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर गौतम। आपने एक बात सही बोली है कि यूजुअली कुछ परसेंट ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि डिसीज से नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो कि वैक्सीन से प्रिवेंटेबल हैं, उनसे their life ends. So moving on to this part of it, Dr. Sachin, you have already told the recommendations, protocols, and everything. You have so much elaborated. So I would like to ask you regarding these opportunistic infections. So how vaccine have these effects on the life course protection on in such immunocompromised and comorbid individuals? Yeah, Ritika, I think Gautam ji ने सही कहा है कि most of the adults are also dying. Adults are dying because of infectious disease. जब एक सर्वे किया गया था, it was a international survey, तो पता किया गया था उसमें कि 25% of the adults are dying due to infectious diseases. मतलब जो डेथ्स हो रहे हैं एडल्ट्स में, 4 में से 1 को हो रहा है इन्फेक्शियस डिसीज के कारण। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज को हम रोका जा सकता है बाय अ सिंपल वैक्सीनेशन। तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम एडल्ट्स में? 4 में से 1 जान बच जाएगी, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसको एम्फेसिस करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये जो जिनको इम्यूनिटी कम रहती है, दीज आर ऑल द पीपल हु डाई बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होता है जो अपॉर्चुनिटी देखता है कि इसकी इम्यूनिटी कम है, अटैक करो,
अच्छा वाला बढ़िया वाला हमें मिल गया बॉडी। सो दिस इज हाउ पीपल डाई। तो ये सबको हमें रोका जा सकता है बाय अ सिंपल स्टेप कॉल्ड वैक्सीनेशन। और जबकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी बात हुई थी, गौतम जी ने सही कहा कि काफी हमारे इंडियन पॉपुलेशन ऐसा है जो मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास लेवल पे है, जिनको अफोर्डेबिलिटी का जरूर इशू आती है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में हम बस एक वैक्सीन का जो कॉस्ट है वो नहीं देखना चाहिए हमें, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना जरूरी होती है। तो काफी हद तक जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इनका कॉस्ट काफी कम है अभी कंपेयर टू व्हाट द इफेक्ट दैट दे आर प्रोवाइडिंग। जैसे मानो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का कॉस्ट है वो इट मे वेरी विद प्लेसेस, बट 1,000 या 2,000 भी रहेगा तो साल में एक इंजेक्शन, लेकिन 4 में से एक जान बचाएगा, तो इट इज वर्थ टेकिंग दैट शॉट। मान लो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, 2,000-3,000 की भी है, लाइफ में एक इंजेक्शन एक टीका पड़ता है, लेकिन आपको जिंदगी भर आपको 90% एफिकेसी में आपको निमोनिया होने से बचाएगा या सीवियर निमोनिया होने से बचाएगा। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। अगर आप एक निमोनिया के साथ आप एडमिशन होते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं या फिर डेथ भी हो जाती है, तो उससे एक पूरे फैमिली को कितना नुकसान होती है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कितना उसको बर्डन झेलना पड़ता है। उसको एक सिंपल टीके से अगर रोका जा सके तो व्हाई नॉट गो अहेड विद दिस स्टेप। तो इन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा जाए तो ये सारे जो 1/4 ऑफ द मोर्टालिटी है उसको बचाया जा सकता है बाय सिंपल स्टेप कॉल्ड वैक्सीनेशन। और इंडिया इससे काफी दूर नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो प्रोग्रेस टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट इन अडल्ट वैक्सीनेशन। माना कि इवन इन रिमोट एरियाज में इतना जानकारी नहीं है डॉक्टर्स को, लेकिन मोस्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अबव दैट लेवल पे ये जानकारी हम फैला रहे हैं। वी आर एजुकेटिंग पीपल वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होगा या प्रेस मीडिया प्लेटफॉर्म होगा कि अडल्ट इम्यूनाइजेशन भी काफी हद तक जरूरी है। इंडिया में भी काफी हमें रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, स्पेशली एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, एपीआई जो हम बोलते हैं, एक रिकमेंडेशन चार्ट दिया है कि अडल्ट्स में ये सब वैक्सीनेशन आप बेसिकली करो सबको। दीज आर द बेसिक रिकमेंडेशंस कि ये वैक्सीनेशन आपको सारे अडल्ट्स में करना है। पर कितने हद तक ये फॉलो हो रहा है, दैट इज व्हाट इज वरीसम। जैसे पीडियाट्रिक्स में हो रही है, इट इज यूनिवर्सल, तो सबको करना हमेशा जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। बट अडल्ट्स में इट इज नॉट मैंडेटरी, तो कोई इंफॉर्मेशन फैलाता नहीं है। हम पेशेंट्स को या मरीजों को या इवन लोकल पब्लिक को ये हम नहीं बताते हैं कि आपको भी वैक्सीनेट करना जरूरी है। और काफी हद तक लोगों में जो हेजिटेंसी की भी बात हो रही थी, तो लोग सोचते हैं कि पीडियाट्रिक्स में चलो बच्चे हैं, इनको कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, टीका लगवा लो। अडल्ट्स में एक नोशन है कि हम हेल्दी हैं, हम क्यों वैक्सीनेशन ले। ये कोविड में भी हुआ था कि हम तो हेल्दी हैं भाई, हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, हम क्यों वैक्सीनेट, अपने आप को वैक्सीनेट करके कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो कौन झेलेगा उसको। सो ये जो नोशन है इसको हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया बिना ये हटा नहीं सकते हैं। सो वी हैव टू एजुकेट द पीपल, वी हैव टू एजुकेट द डॉक्टर्स, वी हैव टू एजुकेट द इवन द नर्सिंग स्टाफ कि ये जो वैक्सीन है इसका जो बेनिफिट है ये क्या है और इसका माइल्ड साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कोविड में भी बात हुई थी, माइनर साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन वो किसी ने बताया नहीं, तो 1-2 लोगों में भी 1,000 में अगर वो साइड इफेक्ट आएगा तो लोगों को उस पर डाउट आएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये सब जानकारी पब्लिक को दिया जाए और अडल्ट वैक्सीनेशन को इतना जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन जैसे प्रमोट किया जाए, ताकि ये एटलीस्ट 4 में से एक जो मर रहे हैं इसके कारण, तो इसको हम बचा सकें, तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द पब्लिक हेल्थ। Right, Dr. Sachin, you have very rightly mentioned that the cost, the effectiveness, and the benefit in the life course of a person, outweighs the cost of the vaccine. That if the patient takes the vaccine, it can actually improve their quality of life. They are less prone to opportunistic infection in terms of comorbid and immunocompromised individuals. So moving on to the HIV patients, Miss Sudha, are you there? Hello. Yes, yes, I'm here. Yes. Yes, ma'am. So, what do you think that these public awareness campaigns and education plays in raising awareness about the importance of vaccination in the life course of an individual with HIV?
Yeah, this is very interesting topic, and this is also very important. Also, the role of public health campaigns and education. Uh, so, not only to HIV, to all other जो भी public health से related जो campaigns चलते हैं, not for only TB के लिए चलते हैं, hepatitis के लिए चलते हैं, malaria के लिए. So for that, it is very important कि communication का जो है, there are various channels of communication and various mediums of communication और various types of communication. तो जो हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम गांव के तरफ से करेंगे तो देयर इज फोक मीडिया होता है ना, और लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर. तो वो पहले देखना है कि कल्चर वाइज किस तरह का कम्युनिकेशन है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस तरह के कम्युनिकेशन जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स जो किए जा रहे हैं उसमें उस तरह के मैसेजेस, राइट मैसेजेस टू द राइट पीपल, कल्चरली अप्रोप्रिएट और लैंग्वेज बैरियर जिसमें ना हो, इस तरह के कैंपेन्स किए जाए. तो कैंपेन्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर HIV के फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कैंपेन्स. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ तो होता है कि वर्ल्ड एड्स डे जब होता है तो उस समय में इट इज़ नॉट ओनली फॉर वर्ल्ड डे, उसके पहले से एक महीने पहले से पूरी तैयारियां होने लगती हैं, एंड टू द एंटायर HIV एंड एड्स सेक्टर उसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज होती है. इट्स नॉट काइंड बोरिंग टाइप का पब्लिक हेल्थ कैंपेन नहीं होना चाहिए. When I was working in HIV and AIDS sector in Africa, so in South Sudan, so that time they were organizing many kind of activities such as आप तरह तरह के गेम्स रखते हैं, स्पोर्ट्स का करते हैं. तो फॉर 15 days ये होता रहता था. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर मोबाइल फॉर टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग के लिए सारी चीजें मोबाइल और कैंप मोड में भी होती थी. तो देयर माइट बी वेरियस काइंड ऑफ कैंपेन्स जो होती है. लेकिन जो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे HIV से रिलेटेड फोकस, तो कहते हैं ना कि वन टू डजन फिक्स टू ऑल. तो HIV सिर्फ नॉट ओनली फॉर PL-HIV बट ऑल्सो द वल्नरेबल पॉपुलेशन. तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में कौन है हमारे यहाँ? तो women है, of course है ना. Youth population they are vulnerable. Apart from that, there are other key populations such as transgender, जेंडर हुए, इंजड़ा हुए, है ना, MSM हुए, फीमेल सेक्स वर्कर्स हुए, जो ड्रग यूजर्स होते हैं, ट्रकर्स होते हैं जो मूव करते हैं. तो these are some of the key population. उनके लिए जो होता है ना, that should be targeted intervention during the public health campaign. उसमें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके अकॉर्डिंगली कोई भी पब्लिक हेल्थ कैंपेन को डिजाइन किया जाए, अकॉर्डिंगली उनका क्या इफेक्टिविटी है, इफेक्टिव है कि नहीं, ये उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं कि देयर इज ऑफेंसिव कम्युनिकेशन मैसेजेस उसमें है. तो इनको देखना पड़ेगा, और इसको देखने के लिए इवन इन द कैंपेन्स ऑल्सो जो मीडिया का भी जो रोल होता है, तो वी इन्वॉल्व the community group, community representatives. So these are the communities like transgender and PL-HIV. So it is very important for their involvement कि उनके इन्वॉल्वमेंट से किस तरह का मैसेज हो टेस्टिंग के बाद से, whether it is effective or not. So that is how we are doing here in some of the areas. Apart from that, the outreach. Only the public campaign, there are various methods. So one of the methods is the outreach activity. That is how in some of the projects in HIV AIDS field they are doing. That is the importance of IPC also. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए से आप उनको बताते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मास मीडिया और सोशल मीडिया से वो चीज़ नहीं निकल के आती जिसकी अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए से हो पाती है. So that is also very important, the IPC, and also the awareness in the institute. खास करके बच्चों के अगर मॉड्यूल्स में अगर पब्लिक जो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैंपेन, अगर उनके मॉड्यूल्स को भी इन सब चीज़ों को अगर डाला जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, HIV का तो मतलब होता है, साथ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है. So that will also play a very effective role in raising the awareness about the importance of vaccination with HIV. इसलिए एक और चीज जो मुझे मैंने देखा कि the risk, it should also somewhere it should also be
इसका भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसके साथ। ऐसा तो नहीं है कि एचआईवी का पर्सन है और वो सबको देख करके इसने जो देखा मीडिया में ये है पब्लिक हेल्थ कैंपेन। So that's why I am telling you the importance of this interpersonal communication in the public health program. It is very important क्योंकि इससे जो है जो भी काउंसलिंग प्रॉपर काउंसलिंग से जो बात आएगी इसमें पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा कि व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट for raising the awareness. So that's what I want to say. Like correct information, culturally effective, and to target the various community in the public health campaign is very important in raising the awareness. Thank you. Thank you so much, Ms. Sudha. You have mentioned that, apart from the HIV population itself, we also should vaccinate the vulnerable population that is present, um, uh, that is there. And apart from that, you have mentioned that, one shoe doesn't fit all. So we have to think about on an individual level while we vaccinate these people, and the awareness while we spread awareness regarding the vaccination in HIV and other immunocompromised and comorbid individuals. Moving on to the last question to Dr. Gajendra sir, how can we measure the effectiveness of vaccine programs for comorbid individuals and ensure that they are meeting the needs of this population? Okay. So basically, to measuring the success of any program, first and the basic number which government looks is the basic thing, which is look at the coverage and sort of access and coverage, that how many people have how many people were reached, and at what till what area we can cover the people. I mean, are there any left missed areas or something? But in this case, in adult vaccination, that there are difficult things, and as I was listening to the sickle cell conversation by Gautam ji. So see, in the sickle cell is just one of the example. There are many other things in which the problem with the system is that we don't know the exact denominator. For most of the things, we don't know the exact denominator, that what percent of population or how many people are affected by this thing, right? So as a population, we know this much. For example, let us say there is a population of 2 crore in 2 crore in a state, but out of, and these are the state district population, and that's how we do that, because we have some census numbers, and then we do the projections. Now this is fine. This is overall population. Mother and children, as I said earlier, that these are the service delivery data, so these are coming through institutions. But the immunocompromised people or the comorbid people, we are only relying on those people, those who are coming to your institutions. And if somebody is coming to your institution, it means it is registered. Apart from that, you don't know the exact number, and that is there comes the problem. So let us say it like this, that in a population of 1000, let us say there are 100 people are actually immunocompromised or comorbid actual, but only if 20 are coming, so you would register only 20. The rest 80 you will never reach unless until you do the community engagement more, or you make that much aware that people come by themselves, or maybe you do intensive surveys or something like that. That is a humongous task. That is resource. Obviously, resources are needed. So the very first thing while measuring the effectiveness is that how much we know about it. Now, in that scenario, whatever the population or whatever the numbers we know, so there are some ways to measure the effectiveness. One is the vaccine uptake. So basically, the monitoring the percentage of comorbid individuals who receive recommended vaccine can help to evaluate the effectiveness of vaccine program. This can be done by analyzing data from electronic medical record, vaccine registries, and surveys, as I said. And this is all about the population which we know. I'm repeating that. The second measurement can be the disease incidence. So, for example, monitoring disease incidence rates among comorbid individuals can actually help to evaluate the effectiveness. This can be done by analyzing data from public health surveillance systems. So, your surveillance system should be strong, and that is known as active surveillance. When people are coming regularly to your health system, their encounter is at that level. And the same way, the third part is the adverse events. So adverse events are very what you can say very important component of this whole scenario in immunization, and it is the part of immunization program from a long time. So monitoring the adverse events following vaccination among comorbids can help to
evaluate the safety of vaccine program, and this can be done by analyzing data from vaccine adverse event reporting system. So you should be having a good public health surveillance system or your good medical registries, and along with a good system to report adverse event. And it should not be a punitive thing, that should not be a punishment type of thing. Otherwise the service providers will be hesitant to report ke agar main report kar dunga to it will reflect on my performance or my error or something. No, adverse event is just a natural part of any immunization program, and some percentage is sort of very natural to occur. But unfortunately policymakers or the government sometimes emphasize too much on this कि एडवर्स इवेंट होना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं होता है, एडवर्स इवेंट होता ही है, यू कैन नॉट नेगेट इट. द ओनली पार्ट इज that you can actually minimize that part. If it is occurring more, then you can look at your system issues. That is so type of messaging regarding healthcare adverse event. The another area where we can monitor is the healthcare utilization. So for example, such as hospitalization and emergency room visits among comorbid individuals can help to evaluate the effectiveness. So if your vaccines are effective, if they are reaching to the targeted population, everything is happening right, then these things would be actually reflect somehow. These are indirect measures, and this can be done by analyzing data from healthcare claims database, that what type of claims are now coming to you. And Ayushman Bharat is there, and you have a good enough database to look at the type of claims which you are receiving. So this gives a broad sense. Because you cannot unless until you what you can say distribute the data up to the line list level, at the individual level, you would not be able, and that is a very big task, but at least that gives a sense. Another indicator would be the cost effectiveness, because as somebody has rightly mentioned कि अगर सारा वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं, कॉस्ट उसका कम नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब पॉइंट ही नहीं आता है. सो इट कैन बी डन फ्रॉम द इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, दैट what type of what you can say economic burden the vaccines are putting on the people. अगर लोगों के पास बर्डन आएगा तो ऑब्वियसली आप कितना भी करेंगे, तो either you make it free from the public sector, and if you are not doing it public sector, then the cost should be obviously affordable. No matter how important it is, nobody can do at least in adult immunization, nobody would be doing it out of the pocket, beyond the range, है ना. And finally, the patient satisfaction. So patient satisfaction can be monitored basically through random or the controlled type of particular the lesser population, a sample basis on a surveys and focus group. So overall, it requires a comprehensive approach that includes basically 4-5 things. One is the monitoring vaccine uptake, disease incidence, adverse event, healthcare utilization, cost effectiveness, and patient satisfaction. By evaluating all this, we can actually ensure that the vaccine programs are meeting the needs of comorbid individuals and improving their health outcomes. Right, Dr. Gajendra, you have very rightly mentioned that first you need to know the numbers that are there, and from the registry in itself, and apart from that, not just the benefits of the vaccine, but also reporting the side effects of the vaccine, adverse event of the vaccine, like when we do pharmacovigilance as well. So you have very insightfully mentioned all the factors that are necessary to measure the effectiveness and ensure that they meet the needs of the this type of population. So with this, I would like to conclude this panel discussion today. So thank you all the esteemed panelists that are there for taking time for this important discussion today. This discussion has been very informative and has provided so many valuable insights into this critical issue. So thank you so much, Dr. Neha, Dr. Gajendra, Mr. Gautam, Ms. Sudha, and Dr. Sachin. Thank you so much for taking time for this discussion. Thank you so much for inviting. Thank you so much. Thank you Yeah, for thank having you us. so much. Thank you.